Good evening everyone. Today we will be starting with chapter number 6. Last video में हम लोग chapter 5 डिस्कस किए थे जो कि था selection of the enterprise, मतलब कि selection of the size of the enterprise and the investment you are going to put on that enterprise. अभी we'll be studying with chapter number 6. This is part 1 and the chapter name is setting up of an enterprise. ठीक है, तो guys okay, so this is chapter number 6 and the name of the chapter is setting up of an enterprise, and we will be discussing two topics today. That is the factors which are to be considered before setting up of an enterprise and how to execute your plan. Okay, your plan to set up an enterprise. Okay, so there are 5 basic M's to set up an enterprise. मतलब 5 M बोला जाता है कि जब कोई एंटरप्राइज शुरू होता है तो ये 5 M's का ज़रूरत होता है. पहला मैन जो कि लेबर होता है. Then you have material, that is the raw materials which you use to produce a product. Then the machine which helps the raw materials to become a final product, which helps the raw material to get into that process to make the final product, to produce the final product. And for all these three things, that is the man, material and machine, you need money to buy them, you need salary to pay your workers, and so the fourth one is M. And the last one is the market, जहाँ पे your finished goods will be sold, will be distributed. ठीक है, so these are the 5 basic M's. So for a successful operation, for a successful enterprise, ये 5 M का ज़रूरत पड़ता है. You need these 5 M's. Okay, now these are the factors that are to be considered. Number 1 is men, that is the labor. So of all the resources which we have, सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है men. Okay, so the appointment of the staff or the appointment of a manager, और in fact सबसे main जो होता है वो entrepreneur, वो खुद ही एक labor है. ठीक है, वो खुद ही एक human being है. तो यहाँ पे हम लोग men के बारे बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लेबर्स के बारे बात कर रहे हैं. सेकंड में आता है रॉ मटेरियल्स, those materials which you need for the production of your product. ठीक है, so यहाँ पे सेकंड है रॉ मटेरियल्स. देन द थर्ड वन इज द मशीनरी, मतलब कि जो रॉ मटेरियल्स तुम ला रहे हो और जो लेबर्स को तुम अपॉइंट कर रहे हो, तो यू ऑल दोज लेबर्स will do their works with the help of machinery. जो भी production होगा that will be done with the help of a machinery. ठीक है, देन फॉर ऑल द अबव थ्री फैक्टर्स, दैट इज द मैन जिसको सैलरी देना पड़ता है, रॉ मटेरियल जिसको खरीदने के लिए भी तुमको पैसे चाहिए, मशीनरी एंड इक्विपमेंट जिसको खरीदने के लिए भी यू नीड मनी. सो द फोर्थ वन इज मनी. नाउ after your goods are being produced, now they all need to go to the market. So the fifth factor that are to be considered is the market condition, the market situation where you are going to distribute your product to the final consumer. ठीक है, next we have place. It is also an important as and can be decided where the enterprise should be set up. ठीक है, so place is a site जहाँ पे के तुम अपना business setup करोगे. ठीक है, then you have a manufacturing process. Now manufacturing process, before establishing an enterprise, the order of needed process in production should be finalized. By doing this, the production work continues without any hindrance, मतलब without any problem. The manufacturing process goes on. मतलब you have to choose a technology you are going to use for the production of the good. ठीक है, and the last one is the project report. Taking all the above requisitions, मतलब considering all the above 7 points, the project report must be incorporate all the relevant informations with regard to the project and should be submitted to the government industrial department for registration. So this is a project report. You are going to set up an enterprise. Now you have to register your enterprise under the government rules, under the government laws. Therefore the government will give you a green signal that now you can execute your plan, now you can set up an enterprise.
ठीक है, तो ये 8 पॉइंट्स को कंसिडर हम लोग किए एंड देन वी विल मूव फर्दर नाउ फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट एस्टैब्लिशमेंट। जो प्रोजेक्ट तुम बनाए हो, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट को गवर्नमेंट ने पास कर दिया है, नाउ यू कैन फॉलो दैट प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड एस्टैब्लिश योर एंटरप्राइज। नाउ यू विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, now this is execution of your project report। शुरू होता है from arranging the site, then construction of building, okay, then setting up of machines and setting up of equipment, the installations of equipments, then there will be a trial production। After the production you will send your produced goods to the market, that is the packaging and distribution arrangement for entering the market। ठीक है, एंड देन योर प्रोजेक्ट विल बी एस्टैब्लिश। ठीक है, सो इसके बारे में हम लोग ब्रीफली जाएंगे इन द नेक्स्ट पेज ऑफ दिस वीडियो। इट इज़ रिटन सीरियल वाइज के कैसे एग्जीक्यूशन होगा। तो पहले आता है अरेंजिंग द साइट। ठीक है, सो before setting up of an enterprise, the facilities which is very necessary for the project, it should be carefully considered। Now you also have to see the site which you are going in the site where you are going to set up your enterprise should have a proper water supply, should have a proper water supply facility, should have a proper electricity, and should have a good geographical conditions, good weather should be there, experience should then the second one is the construction of a building। Now sometimes the site or building is provided in the industrial area on rent by government, otherwise according to the stability, मतलब जो तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए नेसेसरी है वहाँ पे तुम कंस्ट्रक्ट करोगे। आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग यू विल सेट अप द इक्विपमेंट्स, यू विल सेट अप द मशीनरीज, okay, and for the production process, and then you will give a trial production over there। after that you will do the packaging arrangements and distribution arrangements, मतलब के सामान को जो तुम मार्केट में जाके बेच रहे हो तो उसके लिए तुमको कुछ अरेंजमेंट्स करना होगा कि कैसे मार्केट में सेल करना है, कैसा पैकेजिंग रहना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू नाउ एंटर इनटू द मार्केट। ठीक है, जब तुम्हारा प्रोडक्शन हो जाएगा, after that you will be entering into the market। after the packaging system done you will enter the market, and at that particular time when you will enter the market you can say that you have established an enterprise। ठीक है, सो दिस इज पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 6 जिसमें हम लोग 2 टॉपिक कवर किए। पहला था फैक्टर्स जो कि एंटरप्राइज सेटअप करने से पहले यूज होता है, और उसके बाद था द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, so that's all for today, thank you।